How are you? I'm good. The first thing you type on Google while you search for Mr. Imran Hussein is this scholar who has a lot of controversies about petrol pricing and the Day of Judgment. That's the Yes. first thing that comes in your list. So Imran, I'm extremely thankful to you that you joined us today, and you took out your precious time for us, for the audience in Pakistan. I would like you to tell something about yourself, your educational background. How long have you been in the field of Dawah, and what are your current priorities? Okay. English or Urdu, bro? Tell me, because I'm going to take your cue. Urdu. Let's Okay, go. चलो उर्दू में ठीक है. अच्छा, मैं पहले बता दूं, मेरी उर्दू कुछ इतनी खास नहीं है, but I'm gonna try inshallah to do the best I can. Okay, Um, inshallah. तो जब भी कोई concepts होंगे ना जो मैं उर्दू में नहीं बता सकूंगा, you may need to translate them for me inshallah. Okay, inshallah. So मैं यूके में बड़ा हुआ हूँ, यहाँ यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे एजुकेशन मैंने की है. मैंने आई स्टडी टू डिग्री लेवल. सो मैंने डिजाइन इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री ली और उसके बाद मैं दावा के काम में लग गया उसके बाद. So that's a quick brief on my life, if you like. आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी 32 है. Okay, mashallah. So you are almost 2 years elder than me. What was that driving force which made you go in Dawah? आप क्यों दावा में गए? I mean, आप अच्छा. किसी मल्टीनेशनल में जाते और पैसे कमाते, यहाँ पे तो कोई पैसे नहीं है. हाँ जी, नहीं बस अभी देखें, ये जो दावा का काम है ना, ये एक मेरे लिए एटलीस्ट फॉर मी एक नेचुरल प्रोग्रेशन था. जैसे मैं इस्लाम की तरफ आया हूँ अपनी जिंदगी में, अभी मैं शुरू से प्रैक्टिसिंग नहीं था. मुझे शुरू से ये नहीं था पता कि इस्लाम की डिटेल्स नहीं थे पता. बस जो जैसे टिपिकल कल्चरल इस्लाम एक तरह पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी फैमिलीज में होता है कि रोजे रख लिए, जुमा पढ़ लिया. बस ऐसे ही मुझे इस्लाम का पता था थोड़ा बहुत. और मेरे टीनेज एज में तो मैं बिल्कुल ही ना इस्लाम से दूर हो चुका था completely. You can consider me, quote unquote an atheist in some ways. So जब मुझे इस्लाम फिर से मेरी जिंदगी में आया और I became practicing again, तो उसके बाद नेचुरल था मेरे लिए. जैसे मुझे ये समझ आई कि इस्लाम सच है, उसके बाद एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि अभी ये जो मैसेज है ये दुनिया तक पहुंचाना है. तो it was very natural for me from that perspective. मैंने ये नहीं सोचा कि उस वक्त मैं काम कर रहा था लंदन में, सिटी में काम कर रहा था एज ए डिजाइन इंजीनियर. तो बस मैंने डिसीजन ले लिया आहिस्ते आहिस्ते कि मैंने इस दावा फील्ड में आना है. तो आहिस्ते आहिस्ते, it was a gradual thing. इवेंचुअली पार्ट टाइम शुरू किया, अभी आहिस्ते आहिस्ते फुल टाइम हो गया दावा में अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपकी फैमिली की तरफ से आपका कोई प्रेशर आया कि आप क्यों अपना करियर चेंज कर रहे हो? देयर इज नो फ्यूचर, व्हाई आर यू डूइंग इट? वाज देयर एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर फैमिली? जनरली था थोड़ा बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं था. माय फैमिली वाज वेरी सो अंडरस्टैंडिंग. उस लिहाज से काफी अंडरस्टैंडिंग थी मेरी फैमिली. सो दे वांट रियली, उनकी ये ज्यादा कंसर्न थी कि यार ये एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये बड़ी थी उनकी ज्यादा. और जाहिर सी बात है कि स्पेशली जब शुरू में हम ज्यादा मुसलमान प्रैक्टिसिंग होते हैं यूथ में स्पेशली, तो थोड़े से एक्स्ट्रा जेलस होते हैं, उनको ज्यादा थोड़े शदीद होते हैं अपनी इस्लाम में और इस प्रैक्टिस में, और दूसरों को भी थोड़ा सा ऐसे ही एडवाइस करते हैं. तो वो थोड़ा सा ना उसके साथ ये जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो दुनिया में आजकल एक्सट्रीमिज्म की, वो थोड़ा सा फैमिली में थोड़ा सा उनके दिल में डर बैठ जाता है कि यार ये ऐसे ना हो जाए. तो ये डर था, लेकिन जनरली उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं थी कि और कोई रोक टोक नहीं थी कि क्या कौन सी फील्ड में जाना है, ये करना है, ये करना है. ओके मैन, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक. एक स्लोगन बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी. ओके, सो इट्स माय बॉडी माय चॉइस. ये बेसिकली डिजीज कहाँ से आई कि मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी? व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड इट? इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? यार इसकी फिलॉसफी बड़ी डीप है. अभी कहाँ से शुरू करें? अभी ये देखें, इसका टाइम लिबरलिज्म के साथ भी है, इसका टाइम सेक्युलरिज्म के साथ भी है, इसका टाइम जनरल सो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के साथ भी है. तो अगर जनरली देखा जाए ना, ये अभी जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसमें काफी स्ट्रेन्स हैं, ठीक है ना. लेकिन जो कुछ चीजें उसको यूनाइट करती है ना, जनरली स्पीकिंग, डिटेल्स में जाने के विदाउट गोइंग टू डिटेल्स, एक चीज है कि इट्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ द सेल्फ, एक इंसान की फ्रीडम.
जो इंसान करना चाहता है उसको करने देना चाहिए, ठीक है ना। तो तो इमरान इमरान क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? करने देना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो भाई, किसी को फिट नहीं कर रहा तो वो जो मर्जी करे। आपको हाँ तो कैसा लगता है? मुझे तो कोई तो प्रॉब्लम मसला नहीं। नहीं तो अच्छा, फिलोसॉफिकली मसला ये आता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रीडम का, इसको मैं ठहर के इसमें हम ज्यादा डिस्कशन में जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना कि यू आर फ्री, ये सच है ही नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप इसको गौर से सोचें, नो वन इज फ्री। हर एक इंसान ना किसी चीज की इबादत करता है, ठीक है। जो इंसान ये कहता है ना कि यार मैं फ्री हूं, मैं ना ही खुदा में मानता हूं, ना ही किसी सिस्टम में मानता हूं, ना ही किसी फिलोसफी में मानता हूं, मैं वो करता हूं जो मुझे सही लगता है, वो ऐसा इंसान अपने आप का स्लेव है। दे आर अ स्लेव ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है ना। तो स्लेवरी जो है ना, इंसान इसको छोड़ नहीं सकता। पहली चीज तो ये है, देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट फ्रीडम। हाँ, ये अब इस्लाम के नजरिए से देखें, इस्लाम इज द ओनली सिस्टम और वे ऑफ लाइफ विच कैन एक्चुअली गिव यू ट्रू फ्रीडम फ्रॉम ए वर्ल्डली सेंस। ये एक खास चीज है इस्लाम के बारे में, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। और ये ऐसे अभी इस तरह से देखें आप, इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह में माने, अल्लाह की इबादत करें, ठीक है। दुनिया की इबादत नहीं करनी, किसी क्रिएटिव चीज की इबादत नहीं करनी। जैसे ही इंसान अपने आप को अल्लाह के लिए अल्लाह को सबमिट कर देता है, आई एम गोना सबमिट टू अल्लाह अलोन, आई एम गोना वर्शिप अल्लाह अलोन, उसी वक्त इंसान एक नजरिए से कंप्लीटली दुनिया से फ्री हो जाता है, ठीक है ना, और अपने आप से भी फ्री हो जाता है। तो अगर ट्रू लिबरेशन चाहिए ना इंसान को, वो इस्लाम में ही मिलेगी, वो किसी और सिस्टम में नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है ना। इमरान, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने आप को सरेंडर करते हो तो आप अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर सकते। यू कैन नॉट गो फॉर योर डिजायर्स। ठीक है, तो तो यही तो बात एक है। बंदे को क्यों सबमिट करना चाहिए जब एक साइड पे ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स, और या दूसरी साइड पे ही नीड्स टू लीड हिज डिजायर्स। the bottom line is you have to choose your God, ठीक है ना। the bottom line is you have to choose your God. Is your God going to be yourself? आपका खुदा आप खुद हो अपना खुदा, या आपने अल्लाह को अपने आप को सबमिट करना है, ठीक है ना। और रैशनल इंसान यही सोचेगा, यार जिसने मुझे बनाया है उसको उसके टू सबमिट टू अल्लाह इज द मोस्ट रैशनल थिंग टू डू, क्योंकि वो मुझे जानता है, और वो ये भी जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एज अपोज टू सबमिटिंग टू योरसेल्फ। बिकॉज जैसे इंसान अपने आप को सबमिट कर देता है कि कहता है मैं ही खुदा हूं, मैं अपना खुदा हूं, मुझे पता है सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, दैट्स नॉट ट्रू। बिकॉज किसी भी इंसान को नहीं पता कि अपने आप के लिए इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स व्हाट इज एक्चुअली गुड एंड व्हाट इज एक्चुअली बैड, राइट। हाँ, ये होता है, ये डिजायर्स होते हैं इंसान के, अगर वो फुलफिल करने हैं किसी भी गिल्ट के बगैर, तो फिर ये सिस्टम चलता है, ठीक है ना। तो इसका लिंक बहुत इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लिंक है, लिबरलिज्म सेक्युलरिज्म का एथीज्म के और नाइलिज्म के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लिंक है, उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आप वन बाय वन बताओ ऑडियंस को। तो अभी We're willing to listen. okay, so let's begin with atheism, because I think अभी आप पिरामिड सोचें ना, एक पिरामिड के हिसाब से सोचें, तो atheism I would say is at the bottom of the pyramid from some perspectives. So atheism जो ये philosophy है ना atheism की, जो आजकल यहाँ secularism, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं उसको, ये जो idea है godless, being godless, without God, you're free, do whatever you want, you're your own God, ये अभी atheism ले लेते हैं, उसके ऊपर सोचते डिस्कशन करते हैं। ये जो एथिज्म है, बहुत लोग सोचते हैं कि ये ना एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ये इसका और किसी चीज से ताल्लुक कोई नहीं है, ये बस एक फिलोसफी अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग है, रेलेवेंट है, और ये चीजें सोचते हैं। लेकिन व्हेन यू लुक इनटू एथिज्म, आपको ये पता चलता है कि एथिज्म जो फिलोसफी है ना, ये बहुत ही वीक है, इसमें बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है। आपके एक मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट नाइलिज्म, इसके साथ एथिज्म के साथ कैसे कनेक्ट करता है। आप देखिए नाइलिज्म एथिज्म जो डिफाइन करो व्हाट इज नाइलिज्म। Okay, nihilism का मतलब होता है मीनिंगलेसनेस। ओके, फ्रॉम एवरी, अगर nihilism जनरली की बात करें तो मीनिंगलेसनेस इन एवरी फैसेट, फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। ओके, लेकिन हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं, लेट्स कॉल इट एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म, ठीक है ना। ये एक तरह का नाइलिज्म है जो सेल्फ के साथ है, अपनी एग्जिस्टेंस के मुताल्लिक है, ठीक है। तो इंसान के लिए सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना इंसान के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, वो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, व्हाट्स माय पर्पस, ठीक है। व्हाई ये डू वी तो नीड पर्पस इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज वे पर्पस ड्रिवन। आप देख लें, सोच इस बारे को सोच, देखें, सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं,
पर्पस के साथ करते हैं, शावर लेते हैं पर्पस के साथ लेते हैं, काम पे जाते हैं पर्पस के साथ जाते हैं, घर आते हैं पर्पस के साथ आते हैं, खाना खाते हैं पर्पस के साथ खाते हैं, सोते हैं पर्पस के साथ सोते हैं। जब भी दुनिया में चीजें देखते हैं हम उनको पर्पस के नजरिए से देखते हैं। जब भी हम कुछ बनाते हैं पर्पस के साथ बनाते हैं। ठीक है, वो पर्पस ड्रिवन क्रीचर्स। अभी अब रिसेंटली मैंने वीडियो अपने चैनल में डाला, कल डाला था। रिचर्ड डॉकिंस का एक नया छोटा इंटरव्यू सेगमेंट था, उसमें उसको पूछा गया कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, पर्पस मीनिंग क्या है आपकी लाइफ की। वो पहले तो कहता है फ्रॉम अ साइंटिफिक परस्पेक्टिव मेरे बस जीन्स को प्रोपिगेट करना है, लेकिन मुझे ये फील नहीं होता, मुझे फील ये होता कि मेरा पर्पस कुछ और है। ठीक है, कि नोबल मेरे लिए मेरी जिंदगी में नोबल पर्पसेस हैं कि मैंने ये करना है वो करना है। यू कांट एस्केप मीनिंग एंड पर्पस। इवन a staunch atheist like Richard Dawkins, when it comes to meaning and purpose, he has to put the science aside and look at life and the bigger meaning of life. तो ये इंसान की फितरत है कि पर्पस ढूंढना है, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मेरा कोई पर्पस नहीं है, उनके लिए भी पर्पस होता है। उनका भी कोई ना कोई पर्पस होता है, भले उसको पर्पस ना कहें उसको। ठीक है, सो फाइंडिंग पर्पस इज ए फंडामेंटल रियलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इसको हम एस्केप नहीं कर सकते। लेकिन एथिज्म की जो फिलोसफी है ना, एथिज्म कहता है खुदा नहीं। अभी एथिज्म के साथ नेचुरलिज्म भी जुड़ जाता है। नेचुरलिज्म का डेफिनेशन आपको मैं क्विकली दे दूं। एथिज्म और नेचुरलिज्म काफी सिमिलर है, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। बस नेचुरलिस्ट ये कहते हैं कि जो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, इट्स ऑल मटेरियल। सब चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं वो दूसरी मटेरियल चीजों के लिहाज से अंडरस्टूड हो जाती हैं। मतलब एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड वाया फिजिकल प्रोसेसेस, देयर इज नथिंग बियॉन्ड द फिजिकल। ठीक है, तो एथिज्म का ये स्लाइड फर्क है कि कुछ एथियस्ट कहते हैं कि हाँ, मटेरियल एग्जिस्टेंस के आगे भी कुछ हो सकता है पॉसिबली, लेकिन ये नहीं कि खुदा है, कि अल्लाह है, ये नहीं कहते। ठीक है, तो काफी सिमिलर है। अगर आप एथिज्म और नेचुरलिज्म के लिहाज से देखें, कोई खुदा नहीं है, एवरीथिंग इज एन एक्सीडेंट। सब कुछ एक बड़ा एक्सीडेंट है। बस एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलियंस ऑफ इयर्स हुए हैं, उनको रैंडमली स्पेस में just floating around and have been colliding into each other and eventually have formed into everything that we see in existence today. ये उनका मानना है। ठीक है, उसका मतलब है, अभी ये बहुत जरूरी चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि एथिज्म का अंडरलाइंग ये एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि एवरीथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ ब्लाइंड रैंडम कोल्ड फिजिकल प्रोसेसेस। सब कुछ एक एक्सीडेंट है, बस फिजिकल प्रोसेसेस, रैंडम फिजिकल प्रोसेसेस हैव बीन टेकिंग अ प्लेस एंड एवरीथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अगर हम इस नजरिए से दुनिया को देखें, देयर इज नो मीनिंग, देयरफॉर देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो अल्टीमेट पर्पस टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये ऐसी कोई चीज है ही नहीं अगर एथिज्म ट्रू है। ठीक है, nihilism is what's true then. Existential nihilism and nihilism generally as well. Moral nihilism and all other types of nihilism are true. Okay? Now, this is a very big problem, Fareed, that life on atheism is meaningless. अभी ये आप contradiction देखें। एक तरफ से इंसान की फितरत चला रही है कि यार मेरी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है, मैंने ढूंढना है वो मकसद क्या है। लेकिन Okay. कोई लोग हैं, उन्होंने अपनी वर्ल्ड व्यू फिलोसफी रखी हुई है एथिज्म और नेचुरलिज्म। वो डिक्टेट करती है कि जिंदगी का कोई मकसद है ही नहीं। अभी ये इंसान के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और ये मेरे हिसाब से एथिज्म का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्लॉज ऑफ एथिज्म इज दिस, दैट इट कांट आंसर द फंडामेंटल ह्यूमन क्वेश्चंस। सो Right. सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर एथिज्म इतना वीक है, ठीक है, कि इंसान को ये फंडामेंटल क्वेश्चंस आंसर नहीं करता उसके लिए, तो क्यों जो इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत है, क्यों है पॉपुलैरिटी इसकी, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। और यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि बंदे को कि एथिज्म वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। एथिज्म इज अटैच्ड टू मेनी अदर थिंग्स। एथिज्म is in line with secularism. Secularism and atheism feed off each other. Secularism का क्या जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो स्टेट है और जो चर्च है इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसको सेपरेट कर, ठीक है। रिलीजन हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, राइट। उसको फर्दर डेवलप किया गया कितने काफी थिंकर्स के दिमाग में कि अच्छा अभी ये देखें, बस स्टेट को सेपरेट नहीं करना, इंसान की जिंदगी को रिलीजन से सेपरेट करना है, ठीक है। तो अभी आजकल एक नया टाइप का सेक्युलरिज्म शुरू हुआ है और डिस्गाइज किया गया है क्लासिकल सेक्युलरिज्म में, एक एथियस्टिक टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म, वो जहां पे वो बस सेपरेट नहीं कर रहे जिंदगी को खुदा से, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें डिक्टेट करना है रिलीजन को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
ठीक है, तो नहीं तो सेक्युलरिज्म इमरान और भाई एथिज्म, यार, फिर लोग ये काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि जो सेक्युलर स्टेट्स हैं वो मटेरियली ज्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं और इनफैक्ट पाकिस्तान को भी सेक्युलर स्टेट होना चाहिए, वेरी गुड पॉइंट, वेरी या गुड पॉइंट। या अभी माइनॉरिटीज अभी पे जितने भी तो या दिस इज अ काउंटर क्वेश्चन। आप मुझे कोई एक इस्लामिक स्टेट बता दें या कोई रिलीजियस स्टेट बता अच्छा दें जो प्रोग्रेस की हो। हर अच्छा, सेक्युलर now स्टेट I would agree with them. I would agree with them from one perspective कि secular states progress करनी है दुनियावी तौर से, from a worldly perspective, and this is the point I'm trying to make. अभी ये लिंक जो है ना, ये जो रैबिट होल है ना, काफी डीप जाता है। सेक्युलरिज्म एथिज्म साथ में काम करते हैं। अभी जैसे ही आपने इंसान को सेक्युलर बना दिया, एथियस्ट बना दिया, क्या होता है? अल्लाह के बारे में इंसान सोचना भूल गया है। अभी क्या ना, उसके अंदर एक एक वॉइड है, एम्प्टीनेस है, ठीक है ना? उसको फुलफिल करना पड़ना है किसी ना किसी चीज से। इंसान की जो फितरत है, जो चला रही है मीनिंग और पर्पस के लिए, अल्लाह के लिए, उसको भी ये होल को फिल करना पड़ना है। किस चीज से फिल होगा? अभी इंसान के सामने क्या है? दुनिया, द मटेरियल वर्ल्ड, द फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंसान ने नेचुरली उसकी तरफ, उसका रुजू उसकी तरफ होना है। नाउ व्हेन यू फोकस ऑन द मटेरियल वर्ल्ड, ये अभी इंसान बन गया, एक टूल बन गया है सिस्टम के लिए, ठीक है ना? The human being is focusing on the material. यहाँ पे कंज्यूमरिज्म शुरू होता है, यहाँ पे मटेरियलिज्म शुरू होता है कि इंसान की जो जो ख्वाहिशें होती हैं, मटेरियल ख्वाहिशें होती हैं, अभी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। Materialism leads to consumerism. Consumerism feeds the capitalist system, right? And obviously, then from a worldly material perspective, there's going to be progress. You're going to get more of the material things. So from that perspective, I would agree with that understanding that secular states lead to material pleasures and material gains and material flourishing. Absolutely, they do. But that is not the goal of humanity. That is not the goal of life, right? And इसीलिए, इसी reason से कितने लोगों को इस्लाम से प्रॉब्लम है? You know, one of the main reasons people don't like Islam, or some people don't like Islam, is because it doesn't get the human being to focus on the material world. दुनिया मकसद नहीं है, मकसद आखिरत है, मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये दुनिया एक स्प्रिंग बोर्ड है। अल्लाह ने यहाँ पे हमें भेजा है कि हम अपनी आखिरत कमा सकें, ठीक है ना? लेकिन ये जो आइडिया है ना, ये लोगों को खाता है। They just can't deal with this idea, especially अच्छा, एक और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया अच्छी नहीं, तुम्हें आखिरत में क्या मिलेगा? रिपीट करें क्वेश्चन को भाई, क्या कहा है? What he says is that if you are not happy in this world, how are you going to be happy in the hereafter? It's a very popular slogan. इधर एक जर्नलिस्ट है, yeah. वो बार बार कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया अच्छी नहीं है, तो तुम्हें आखिरत में क्या मिलेगा? अच्छा, तो ये I would call this a logical fallacy, because the logic there is completely wrong. उनका assumption ये है कि ये दुनिया अगर मटेरियली आपके लिए अच्छी हो, कि आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हो यहाँ पर, तो फिर आपको वहां पे आगे जाके भी अच्छा मिलेगा। ये तो मुझे ये मुझे वो याद आ गया। एक पैराबल अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह काफ में प्रेजेंट करते हैं, जो दो गार्डनर होते हैं। दो गार्डनर की स्टोरी है। एक उनमें से अल्लाह ने उसको बहुत सारी दुनियावी चीजें दी हुई है, उसके बहुत बड़े गार्डन्स हैं, खेत, बाग हैं, खेत, जो भी आपने सोचना है, he's got gardens, trees, loads of amazing, उस दुनिया from a material perspective is doing really well. He has a lot of money. और उसके साथ क्या होता है, सुभानअल्लाह, ये एक यूनिवर्सल लेसन है हमारे लिए। वो एक दिन अपने गार्डन के अंदर जाता है, देखता है, अपनी चीजें देखता है, और उसके जो मटेरियल पोजेशंस है ना भाई, उसको कंप्लीटली डिलूट कर देते हैं। He looks at his material possessions, तो क्या कहता है? कहता है मुझे नहीं लगता कि क़यामत कभी आएगी, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें कहीं पे भी जाएंगी, अगर आएगी भी तो अल्लाह ने मुझे यहाँ पे अच्छी चीजें दी, मुझे आगे भी अच्छी चीजें मिलेंगी। This is a delusion that is being mentioned now in the 21st century, which Allah points out over 1400 years ago, right? तो उसको जगाने के लिए क्या चाहिए होता है ऐसे इंसान को? Everything has to be taken away from him. That's exactly what happens to him. He wakes up the next morning and everything is removed. क्या करता है फिर? बैठ जाता है, अपने हाथ ऐसे करता है और कहता है कि काश मैंने अल्लाह के साथ कोई चीज माबूद ना की होती, शिर्क ना किया होता मैंने। उसका शिर्क क्या होता है? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। He wasn't worshipping idols. वो किसी और खुदा को नहीं मान रहा था। उसका खुदा क्या था? उसने शिर्क किस चीज के साथ किया? His material possessions, right? And this is exactly what seems to be the case as to what you're saying, what people are promoting in these sort of slogans and ideas. That if you have it good here, you're going to have it good in the hereafter. No, that's not the case. Allah Islam में हमें clearly बताते हैं कि आपकी जो economic, social standing इस दुनिया में है ना, it doesn't reflect on your hereafter. हाँ, आपकी जो spiritual standing है इस दुनिया में, the purity and the sincerity of your heart, your connection with Allah,
That's what's going to hold a standing for you in the hereafter, right? So ये दुनिया की philosophy लोगों ने बदल दी है जिंदगी की, and based on that, people are just being fed wrong information. नहीं तो That being said, नाइलिज्म की पूरी फिलॉसफी है, यू आर सेइंग दैट इट्स अ रॉन्ग फिलॉसफी. नाइलिज्म मैं नाइलिज्म जो है इंसान की फितरत के खिलाफ जाता है, क्योंकि फितरी तौर पे हमें फॉर एग्जांपल पता है, देखें जिंदगी का मकसद है, जिंदगी का कोई डीप मकसद है, नॉट जस्ट प्रोपगेटिंग माय जीन्स एंड डीएनए. इवन रिचर्ड डॉकिंस उस क्लिप में कहता है, जैसे मैंने पहले कहा कि साइंटिफिकली हमारा मकसद है जीन्स को, हमारी जीन्स को प्रोपगेट करना, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है, आई डोंट फील दिस वे, मुझे लगता है मेरा मकसद कुछ और है, मुझे फील कुछ और होता है. सो फितरी तौर पे हमें पता है, इतने बड़े एथियस्ट, one of the gods of new atheism is saying stuff like this, right? So that just speaks for itself. Second चीज हमें पता है कि moral truths हैं, such as we know there are certain, even फितरी तौर पे we don't have to go to revelation कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, objectively गलत है, objectively सही है, ठीक है ना? ये सब फितरी चीजें हैं. Nihilism means कहता है कि these things are meaningless, there is no meaning behind it, there is no moral truth, there is no objective right or objective wrong, there are no existential truths, there is no ultimate meaning to life. These things go against human nature. So nihilism is against human nature. इसीलिए तो अगर आप ये जो existentialist philosophers थे 17th or 18th century में, even the 19th century, such as Albert Camus is one of the famous existentialist philosophers who spoke about this. उसने इस बारे में बात की कि nihilism जो है ना, it leads or godlessness leads to the absurd. Meaning जिंदगी का जब इंसान को पता चलता है ना जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, ये बस एक रियलाइजेशन नहीं होती, रैशनल रियलाइजेशन, ये बहुत सारी इंसान को पेन देती है, एंजाइटी देती है, डिप्रेशन देती है. And the question is, why does it lead to anxiety and depression? Well, the answer I would say is because it goes against your nature. Something deep down inside recognizes nihilism is false, that there is meaning to life, that there is purpose to life. And when you adopt atheism or naturalism, you go against your nature. So इंसान की फितरत के खिलाफ है ये जो atheism और naturalism. नहीं तो आर्गुमेंट ये आता है कि दैट्स ओके, लेकिन ओके फाइन, कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है, बट as long as we are applying the harm principle that is by John Mill, that we are not harming anyone, हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, कोई मर्डर नहीं कर रहे, कोई रॉबरी नहीं कर रहे, so let us live the way we want to live. उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जो मिल की consequentialism theory थी ना, ये इसके भी काफी branches हैं, but the idea is as long as you don't cause harm to people, as long as the consequences aren't bad, then do whatever you wish, do whatever you will. लेकिन मसला इसमें ये आता है, पहली चीज काफी इसमें issues है. First thing, how do you know the action you're going to take is not going to lead to harm for a surety? You don't know. For instance, अगर mutual consent है, कोई बंदा pornography देख रहा है, या कोई mutual consent कि नहीं दो लोगों का, their boyfriend and girlfriend, so they are not harming one another, or someone is doing something wrong, okay, so there's no harm. तो ये मसला है ना भाई कि there's no definition of good or bad anymore, right or wrong, on this sort of nihilistic outlook, and this is what the world is going towards. ये दुनिया इसी तरफ जा रही है. As long as it doesn't cause harm, अभी ये principle है, this is a principle, right? As long as it doesn't cause harm, you can do it. ये principle कहाँ से मिला इनको? किसने बताया कि ये principle सच है? It's just an idea people have which suits their desires. And they can some people are good at rationally justifying things, logically and rationally, and then they go with it as long as you can fulfill your desires. Another reason, एक और reason जो लोग खुदा से मुड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक atheism का एक benefit from a दुनियावी perspective, एक ये है benefit उसका कि accountability खत्म हो जाती है, ठीक है ना? Accountability खत्म हो जाती है और इंसान को मौका मिल जाता है कि अपनी desires को fulfill करे जाके. That's it. You can just go do whatever you want. No accountability, no guilt, that's fine. So easy हो जाता है इंसान के लिए गलत काम करना, justify हो जाता है, and especially when you adopt atheism, अभी good and bad की तो meaning खत्म ही होगी, actual good and objective good and bad, it's all subjective. और दुनिया में ये देखने अभी आहिस्ते आहिस्ते as the days go by, new things are being justified, new things are being allowed, and under certain shoddy principles which have no basis themselves, people are doing whatever they want, and this is again problematic from many different perspectives. अच्छा, और पाकिस्तानी सोसाइटी में या इंटरनेशनली, हाउ कैन वी एज अ मुस्लिम्स काउंटर दिस nihilism or atheism or materialism?
देखिए, I think What's the best there's some, what's the best road map? अगर कोई बंदा कहता है मेरी yeah. जिस्म मेरी मर्जी, so should we just So let him say कि ठीक है आपका जिस्म आप जो मर्जी करो? yeah, so I think there's a few things here. पहली चीज तो I think there is an underlying complex as well that us Pakistanis have. Post-colonial complex, which is still not completely left us, to be very honest. We look towards the West and we think whatever's happening in the West is right, automatically, axiomatically. Just naturally हमें लगता है कि जो कर रहे हैं West में कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है ना? इसीलिए हम, for example, रिचर्ड डॉकिंस को देखते हैं, सूट एंड टाई पहना होता है उसने, प्रोफेसर है, ठीक है ना? वेस्ट से है, इंग्लैंड से है, जो भी बात करता है समझ आए ना आए सच है, ठीक है ना? सच मान लेते हैं. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? वी शुडंट हैव these complexes. Right, our Pakistani people, the Pakistan. Bro, I'll tell you something. Yeah, I've been to Pakistan several times, even in the last decade. और एक बार मैं ना fast, I think it was Fast University. Last time जब गया था हमारा कोई एक दावत ट्रेनिंग कोर्स हुआ था वहाँ पे. I was shocked. जितनी कैपेसिटी ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की है ना कि अंडरस्टैंडिंग की और नॉलेज की, और I haven't seen it anywhere else in the world. Mashallah, Pakistani students are super bright. And on top of this, Allah has blessed us with the truth, and we have the truth that the world needs. But unfortunately, what's happening is we're falling prey because of our lack of confidence in some cases, and just being impressed by certain aspects of the West without questioning it. Now, and for example, अभी डॉकिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, उसको हम मान बैठते हैं, उसको समझ यार, especially on campus, मैंने नोटिस किया है, campuses पर एथीज़म जो ज्यादातर एथीज़म चल रहा है ना, इससे एक फैड है, it's like it's cool, right? It's trendy. Everyone's doing it, it's trendy, you know. हमजा एग्जांपल देता है, एक बार पाकिस्तान यूनिवर्सिटी सिगार पी रहे हैं और दो प्रोफेसर की कॉपी करें जो एथीस्ट सेक्युलर प्रोफेसर हैं, और it's something that is fashion तौर पे, just cheap mentality, everyone's doing it. Just we need to stop and really think about what we have in Islam. दुनिया में क्या हो रहा है? इस्लाम का एक portrayal बनाया जा रहा है कि Islam is backwards, you know, it's barbaric, there's nothing in it which is good, there's nothing that can benefit humanity, etc. और दूसरा portrayal बताया जा रहा है, you know, atheism is the way forward, it's rational, it makes sense of reality, you know, it's progressive. All of these type of ideas are being thrown out there. And what's happening is majority of people, ज़्यादा लोग they're just falling to this. ठीक है ना? We have to think about this and question these things. Hopefully we mention something about atheism. कुछ चीजें हमने पॉइंट आउट की एथीज्म के बारे में जो हमें साफ नजर आ रहा है यार, ये जो आइडियोलॉजी है ये इनहेरेंटली फ्लॉड है, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, इट्स एम्प्टी. एंड ऑन टॉप ऑफ इस्लाम को देखिए, इस्लाम की एक खूबसूरत चीज है. जब हम इस्लाम को स्टडी करते हैं, कुरान को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें कुरान में जो हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन भाई, जो देखिए जो फिलोसफर्स थे ना, ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, इस्लाम जब आया 6th सेंचुरी में, उसके पहले भी, उसके 500-600 साल पहले जो एरिस्टोटल और सोक्रेटिस, ये आप इनकी फिलोसफी देखें ना, ये सर्च कर रहे थे जो बड़े क्वेश्चन है जिंदगी के, उसके बारे में इंक्वायर कर रहे थे, खुदा के बारे में पूछ रहे थे, आफ्टर लाइफ के और लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, वर्च्यूज और मॉरल्स के बारे में इंक्वायर कर रहे थे, लेकिन उनको आंसर्स नहीं थे मिलते. लेकिन आंसर्स कहाँ दिए अल्लाह ने? इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट 1400 years ago. जो अरब थे उस टाइम पे, उनको कुछ नहीं था पता, उनकी दे weren't known for anything. जो रोमन्स और पर्शियंस थे, उनको they didn't care about them, right? But in the middle of the desert, Allah sends the Quran which answers all of these questions. जो भी इंसानियत के सवाल थे ना, बड़े सवाल जो थे, इस्लाम उनको आंसर करता है. For example, the purpose of life being the biggest one. अल्लाह answers it. पूरा कुरान जो है वो ये जो इंसान का मकसद है जिंदगी का, उसके 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 आसपास रिवॉल्व करता है. The whole message of the Quran, everything in the Quran is there to facilitate the purpose of human existence. अल्लाह क्या कहता है? वो इमरान, आपकी क्या ख्याल है ये जो प्रोमिनेंट फिलोसफीज आ रही हैं, ये हिस्टोरिकली कैसे ज्यादा प्रमोट हो रही हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो मुस्लिम यूथ को अफेक्ट करते हैं टू अडॉप्ट दीस थिंग्स? अगेन वही बात आती है, ये जो बस हम देखते हैं यार, वेस्ट में फिलोसफर्स हैं, ये एथियस्ट हैं, ये फिलोसफर्स हैं, फिलोसफी कूल है, हमें समझनी चाहिए, और हमारे दिमाग में ये एक मैप सा बन जाता है कि इस्लाम जो है यार पुराने जमाने की बातें हैं, इनको छोड़ो यार, फिलोसफीज पढ़ो यार, ये सेक्युलरिज्म. वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सोसाइटी है वो इवॉल्व होती है, पहले ब्लैक स्लेव भी थी, अब नहीं है, तो हमें भी सोसाइटी के साथ इवॉल्व होना चाहिए. इसमें क्या बुरी बात है? हम सोसाइटी के साथ क्यों नहीं इवॉल्व हो रहे? तो बुरी बात ये है कि हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अकल दी है, अल्लाह ने हमें ये फैकल्टीज दी है सोचने के लिए. If you want to behave like sheep, then go ahead. If we want,
अगर हम जानवरों की तरह बिहेव करना चाहते हैं तो गो अहेड, लाइक व्हाट एल्स कैन यू से? जानवरों का काम है इस हर्ड मेंटालिटी, बस शीप की तरह फॉलो करो, शीप फॉलो, राइट? वी आर नॉट शीप, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है, और एक खास बात आदम अलैहिस्सलाम की, आप देखें जब अल्लाह जो मलाइका थी उनको अनाउंस जब किया अल्लाह ने कि मैं एक इंसान, एक क्रीचर बना रहा हूँ, एक इंसान बना रहा हूँ, ये मखलूक बना रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह आप ये एक इंसान बनाएंगे जो दुनिया पे ब्लडशेड और करप्शन करेंगे, ठीक है ना? अल्लाह ने जवाब कैसे दिया? अल्लाह कहते हैं उनको कि मुझे पता है जो आपको नहीं पता। और फिर अल्लाह क्या करते हैं? अल्लाह जाके आदम को चीजों के नाम सिखाता है, ठीक है ना? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. Allah's response to the question of the angels is to teach Adam the names of things, and then to bring Adam and to get him to tell them the names of these things. So Allah एक चीज demonstrate करता है कि ये जो इंसान है, ये सीख सकता है, समझ सकता है और बता सकता है, बयान की ability दी इंसान को. Allah's made us creatures to think and to reflect and to question. Don't just be sheep. Oh, अच्छा दुनिया evolve कर रही है, let's just follow. That's not what Muslims do. We have been given something far more profound by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah reminds us of what we are as human beings. So why degrade yourself and be anything less than, right? And again, the direction dunya ja rahi, you can see it's very clear. The world is becoming more and more secular, more and more godless, and people are being made to focus more and more on their personal wants and their desires. Right? Fulfill your desires. As long as you don't harm anyone else, just do whatever you want. This is not the purpose of it. And do it. Try it. मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ UK में. I've lived that life. Right? I've been through that. Do whatever you want. I had a very secular upbringing. जो भी मैं चाहता मैं कर सकता था. Right? I've experimented with many things. At the end of the day, you would realize that none of these things are going to fulfill your heart. आपको किसी भी चीज में सुकून नहीं मिलेगा. सुकून एक ही चीज में मिलेगा जब इंसान अपने रब को पहचानता है और अपने रब को याद करता है. As Allah says in the Quran, indeed hearts find rest. दिल को सुकून तभी पहुंचता है जब अल्लाह को याद करे. Remembering Allah, aligning yourself with the purpose of your life, and that's when you're going to find peace and tranquility. You know, these are all facades and these falsehoods that are going to destroy people, and people are experiencing it for themselves. अभी आप देखिए, मैं आपको एक example देता हूँ भाई. You know, so many atheists these days in the West, they're taking a bit of a turn. थोड़ा सा they evolve कर रहे हैं थोड़ा सा. They are turning towards spirituality, right? और ऐसे सैम हैरिस जैसे लोग अभी क्या कर रहे हैं कि बुक्स लिख रहे हैं कि atheistic spirituality के बुक्स लिख रहे हैं. You could be an atheist and you could be spiritual. क्यों? Spirituality का मतलब क्या है atheism पे? It shouldn't even be about spirituality. What does that even mean? Right? इंसान की फितरत अल्लाह ने जो दी है ना, it's an amazing compass, but we have to just become aware of it. लेकिन क्या हो रहा है कि ज्यादा लोगों को people are being channeled and being made to focus on the material and their desires, just so they, because जैसे आप इंसान को ना अल्लाह से डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना भाई, now you've got a tool. अभी आप इंसान को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है भाई, अगर सोचा जाए तो इसको नहीं, तो लोग तो कहते हैं कि आप रिलीजन की वजह से लोगों को यूज करते हैं. Well, so अभी आप if I'm not mistaken you, अभी आप देखें कोई जो इकोनॉमिस्ट थे और जो फिलोसोफर्स थे, कार्ल मार्क्स को ले लें आप, ठीक है ना? उसकी भी ये फिलोसफी थी, ये जो रिलीजन है ना, ये ओपिएट है इंसानों के लिए. ये लोग तभी दिमाग में ख्याली तौर पे पैदा करते हैं जब वो सोशली और इकोनॉमिकली उनका स्टेटस अच्छा नहीं होता. वो जब सफर करते हैं, लोग प्रॉब्लम में होते हैं, तब रिलीजन इन्वेंट करते हैं. और उसको ये प्रॉब्लम थी अभी ये जो इसकी ये थियरी है ना, ये भी गलत है एक तौर से. इट डजंट लॉजिकली फॉलो. जस्ट बिकॉज religion is useful, therefore it's made up. इसमें लॉजिक कोई नहीं है. It's equally possible that that if you're not doing too well from a worldly perspective, it allows you for an awakening to take place, so you can turn to the truth, right? लेकिन उसका एक और बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो ये चाहता नहीं था कि इंसान रिलीजन की तरफ मुड़े, क्योंकि as soon as the human being turns towards religion and focuses on God and the hereafter, no longer is that person focused on the world, and therefore that person is useless from an economic standpoint, because he's not going to be your slave. He's not going to be a slave to the system, which helps for the system to work, right? So this is something we need to understand. It's a rabbit hole, as they say, jo kafi deep hai. There's people pulling the strings, and most people are just not aware of it. Most atheists are not aware of it. Most people, unfortunately, before we take some of the questions,
I've come with this idea. This is for the first time I'm doing with you. Whatever comes in your mind, जो भी आपके दिमाग में आता है, could be a sentence, a short message. Whatever image comes in your mind. A Pakistani atheist. What image comes to my mind? Yeah. What I see. What do you see? What do you feel? You can tell anything. I see someone with great potential wasting themselves. That's what I Okay. see. Professor Hood Boy. May Allah guide him. I think he's had some bad experiences in his life, which have led him to the position he's holding. But do you agree? Do you read his articles? Do you agree the way he thinks? To be honest, bro, I haven't followed any of his stuff recently. I know he wrote a book on Islam and science, which was, and I went through it several years ago. It had several flaws in it. Historically, he doesn't seem to understand the philosophy of science, and he doesn't seem to understand the Islamic tradition properly, and therefore he makes some of the claims that he makes in the book. But if you're to ask me specifics, I don't remember right now, to be very honest. But I do feel he is someone that's probably had some very bad experiences in his life with some Muslims, which have led him to the position that he holds today. So basically, he's a product of his traumas. To be honest, absolutely. And I would say, ज़्यादातर जो लोग atheist होते हैं, they are a product of their traumas, their emotional experiences, which have led them to certain false conclusions. So something's happened in their life, they haven't understood it. And as sort of jogging my memory a bit, I think something about Hood Boy had some experiences with one of his neighbors who suffered at the hands of some Muslims or something like that. I don't remember. But that was one of his bad experiences. But don't quote me on that. But most of the atheists I've dealt with and I speak to, ज़्यादातर ये लोग इनकी जिंदगी में बचपन में कुछ ना कुछ होता है जो ट्रोमा होता है, maybe a loss of the loved one, family members dying. ये लोग ये उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और ये खुदा को ब्लेम कर देते हैं, अल्लाह को ब्लेम करते हैं, और ओवर टाइम ये जो हेट्रेड है ये इंक्रीज होता है और लेटर ऑन इन देयर लाइफ वो फिर एक रैशनल क्लोक दे देते हैं अपने एथीज्म को. But at the end, fundamentally it's emotional. That's what it is. Okay, Hamza Zorges. A very close brother, very honest person, and a mashallah, an asset and a genius. May Allah bless him. Who do you think was his mentor so that he reached a level where he can debate, he can be the number one in debating with the atheist right now in the contemporary world? To be honest, Hamza hasn't had one teacher. He's had several teachers, several people that he respects and he looks up to. He's just I think, see, with him, Allah's blessed him with natural, a natural ability to think. मैं सच्ची बात बताऊं, before I met Hamza, he was the one that taught me how to think critically, and how to sort of analyze things and understand things. I owe that all to him, to be honest. Allah made him the means for that. He's just someone that has been naturally blessed with certain abilities, which are hard to find. And may Allah subhanahu wa ta'ala allow him to be and continue to be an asset for the Ummah. May Allah keep him on the straight path. Ameen. Muhammad Hijab, the new upcoming, the rising talent. He's a gentle giant, bro. That's what I would say. MashaAllah. A lot of people have asked me to invite him over the webinar because they really like him, the way he is in debates. Yeah, if you want, I can ask him if he's available. He's been very busy. Please ask him. Please ask him. Okay, Muslims in Pakistan who are not atheists and not secular as well, but they swing all the way. Sometimes they're religious, sometimes they're not religious. Firstly, bro, I commend them. I commend them for the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Honestly, wallahi, the little time I spent in Pakistan, and I personally love going to Pakistan because I have a natural connection to it, and there's reasons for it. Maybe we can discuss it later. But what I've noticed from the not so quote unquote not so practicing crowd is they love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They have a love for the Deen. They just need a little bit of encouragement to just understand the blessing they have in that is Islam. Okay, Aurat March in Pakistan. To be honest, let's stop following the world and let's really look at what God has blessed us with and how God has made us unique and special as individuals from the perspective as men and women, how Allah has made us equal in ways that is truly profound.
spiritually, and how God has blessed us with our differences. And to be honest, feminism is uh, not my forte. But one thing, one reflection I'd like to share and like people to think about is, why make man the standard? Honestly, like, why? One of the underlying driving forces of feminism is that man is the standard, Man right? shouldn't be the benchmark. Yeah. Yeah, Uh, why make man the standard? Women, to be honest, look, let's put it this way: spiritually, they're on level playing field, right? Now, Allah has made men and women different physically, right? Which is no doubt. Even if you look at like, there's no way empirically look at it, philosophically, whichever way you want to look at it, they're different. Now, it doesn't mean because they're different, one is better than the other. Women could have certain traits and faculties and abilities that men don't have and can't have. Men have certain things that women don't have and can't have, and together they make a whole in a beautiful way when they come together in the right way. This whole idea of feminine, it's just, again, it's a diversion which I don't really understand, and I don't think is needed. If anything, the whole philosophy is based on it's based on an inferiority complex of men. Why should you be inferior and feel inferior to men anyway? For example, I'll give you one example. Women have levels of emotional intelligence that men could hardly have. Very few men have. You know, women could do things that men can't. Can a man ever raise a child? They'll go crazy. Men go crazy if they have to take care of kids for 2 hours. They can't do it. They don't have that ability. And we envy women from that perspective. But it doesn't mean that we want to be like women. No, we respect them for it. We envy them, and we move on. So I think it's based on false assumptions and ideas. okay, Muslims living in West, especially the generations to come, when they To be go there honest, a bit of both, yeah. uh, To be honest, and then yeah. the Go on. generation, they need some freedom. So when Muslims living in the West, generally, I think firstly, I think sometimes we undermine that first generation of Muslims that moved to the West too much. It was much more harder for them as is opposed to us, the second and third generation now, and fourth generation in some cases. They came, they had to work, they had to put in the hours, they struggled, and it was much harder for them to focus on the deen and things like this. So we give them too little credit sometimes. There is a revival in the West as far as Islam is concerned, and it's a beautiful thing to see. But at the same time, there are some that are still falling prey to certain ideas which sort of destroy the human being and turn them away from Islam, which is unfortunate, to be honest. Okay, your reaction when or your feelings when you were in your first debate, First formal debate or first informal debate? first formal debate. So I've only had one formal debate, and feelings were, to be honest, I'm not much. I don't like debating much. I'm not much of a debater. However, um, I left it to Allah. Someone just told me, look, once you step up for the sake of Allah, there's no stepping back. And then you just put your trust in Allah and go ahead. And to be honest, look, we need to. Here's my thinking: Islam is the truth. Anything other than this is not the truth. And if it's not the truth, it has flaws. All you have to do, therefore, is to highlight the flaws and to highlight the flaws to the one that's holding on to the flaws, and then give them the truth. That's what we need to do. So there's Is no there flaw. some sort There's of no worry. pressure when you're debating? Is there some sort of pressure? Naturally, there is. Naturally, there is. Even when I'm giving a talk, bro, I've been giving talks and lectures for probably 8, 9 years now, and still, each time I do a talk or a lecture, there is an anxiety, which is natural, and it's a good thing. Having a little bit of anxiety when you're pushing yourself to do things which you're not comfortable doing is a very good thing because it keeps you aware. Okay, last And, question and is that humble. name 2 to 3 speakers that you recommend or you listen to. Your favorite speakers in the contemporary world. They could So be I academic. don't really have. Okay, I don't really have favorite speakers. There are some people I have benefited from and I've listened to. Um, so I'll give you a quick list if you like. So mainstream speakers, I would say, although I don't listen to them myself much, I don't listen to any sort of lectures much. I think Okay. Mufti Mink is quite a good speaker to listen to because keeps it very simple, very spiritual, which is nice. There's also a sheikh called Sheikh Yawar Beg, who I've really benefited from. He has some stuff online that you could check out as well. And to be honest, my personal inspirations. Now I know some people may differ, may have some views regarding them, but again, my thinking is I always like to say the good from people, and there's benefit in every facet. So, for example, Dr. Israr Ahmed,
I've benefited from a lot when it comes to the understanding of the Quran, etc. And Sheikh Sa'di has a beautiful tafsir on the Quran. Ibn Kathir is an amazing resource to study and to read. And again, maybe a bit more controversial, but Amin Hassan Islahi has done some phenomenal work on the coherence of the Quran. So those are the my sort of personal inspirations. Even Maulana Maududi's Tafhim al-Quran is a phenomenal resource as well, historically especially when it comes to studying and understanding the Quran. So those are my sort of main go-tos that I would recommend. Everyone, listen, people. Everyone who is controversial has to be his favorite. Yeah, subhanAllah. It's just the case, bro. Everyone's controversial from some perspective. Okay, let's take some of the questions. Hisham says, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. His next question is, to what extent are scientism and naturalism related? To what extent are scientism and naturalism related? Sorry, bro, I've stopped talking in Urdu, man. Okay, I'm gonna try to bring in the Urdu again as well as much as I can. So scientism and naturalism. Okay, so there is no direct link between scientism and naturalism. In दोनों में कोई direct link नहीं है. Okay, there is philosophical naturalism and methodological naturalism. और ये जो दो different types of naturalism है, इनको ना atheists mix कर देते हैं. Methodological naturalism is a part of science. It's the method of science. और ये method क्या है? Simply put, कि हम जब science करेंगे, science में engage करेंगे, we will limit ourselves to a material explanation, materialistic explanation. ठीक है ना? ये methodological naturalism है. ये खुदा को deny नहीं करता, अल्लाह को deny नहीं करता. बस ये कहता है कि हम जब कोई चीज study करेंगे, उसके लिए हम कोई ना कोई natural explanation ढूंढेंगे. That's methodological naturalism. Philosophical naturalism ये है कि एक philosophy है जैसे atheism है. There is no God, there is nothing beyond the physical, there is no creator. It's all material and physical. और atheists क्या करते हैं? Methodological naturalism और philosophical naturalism को mix कर देते हैं. और ये present करना चाहते हैं कि science और naturalism is together, and therefore science leads to atheism or naturalism, which is not the case. It's not true. Okay, next question is from Musab. Musab bin Umair says that, what's your personal opinion about how evolution and Islam can go together? So people don't turn atheist because of it. So can Islam and evolution go together so that people don't have to choose one of them? Okay, I'll answer it in a few ways. Firstly, Sabur is the best resource on this. So Sabur का जो channel Darwinian Delusions, उसको आप देखें, उससे बहुत फायदा होगा आपको. पहली चीज जो है, even if you believe in evolution, ठीक है, अगर आप evolution में मानते हैं, let's just take that for an example. जो standard model है evolution का, जो हमें बताया जा रहा है, जो Darwinian mechanism के through understood होता है, even if you believe in this, it doesn't mean, इसका ये मतलब नहीं कि खुदा exist नहीं करता, Allah exist नहीं करता. It doesn't logically follow. Okay? It could be God is the one that created this system and put it in place, which makes sense of this whole process more so anyway, if you were to believe in this. So ये पहला point है. So ये barrier नहीं होना चाहिए किसी के लिए इस्लाम में आने के लिए, पहली चीज. दूसरी चीज जो है, जो मेरे understanding है up until now from what I've looked into and what I've taken from Sabur, जहां तक सवाल पूरी दूसरी जानवरों का है, animals का है, other existence or life forms का है, it's very possible कि जैसे हमें बताया जा रहा है साइंस में कि ये जानवर ऐसे इवॉल्व हुए हैं, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से, all of this the process, हो सकता है कि ऐसे ही हुआ है, क्योंकि इस्लाम कुरान इस पे साइलेंट है. कुरान इस पे कोई ज्यादा हमें बताता नहीं है कि ये जानवर कैसे पहुंचे, इनकी डेवलपमेंट कैसे होगी. It's very possible they evolved as science tells us. लेकिन the orthodox understanding है कि अल्लाह ने आदम को अपने खुद बनाया अपने हाथों से. This is not to be understood that God's literal hands, but obviously that, you know, हम मानते हैं when Allah says Allah created with his own hands, but we don't say the how. It's कैफियत हम इसमें नहीं जाते. How are Allah's hands? What does this mean? We don't. Allah knows best. Okay. Allah is unlike anything we can imagine. But that means इससे हमें ये understanding मिलती है कि अल्लाह ने आदम को खुद, meaning it's an individual creation, the orthodox understanding. Now, how could this be? Maybe there were some creatures in the Homo family, as they say, Homo sapiens are us human beings is the categorization, but there may be other Homo category creatures in the Homo category
that existed that evolved from other creatures, right? And at that point in history, Allah created Adam, which was similar to these other creatures, but different, and then sent him on the earth as a unique creation. That's how I understand it. Possibly that's what happened. Again, this is my understanding. There is nothing conclusive about this. What's interesting is, I was speaking to Subur about this the other day. Subur ने एक interesting analysis बताया कि देखिए अल्लाह सुब्हान तआला जब मलाइका को बताता है कि मैं एक creature पैदा करने लगा, बनाने लगा हूँ, वो कहती है कि are you going to create a creature that's going to cause corruption and bloodshed? कि वो जो एक दूसरे का खून करेंगे दुनिया में. Now, some of the scholars say this is referring to the experience of the jinn. Lekin Yeah. jinn don't bleed like humans bleed, right? So this may be a clue that there were other creatures from the Homo family who were similar to humans that caused corruption and Ibn bloodshed. Kathir has written on this that there were other creatures. Sorry, say that again, bro? Ibn Kathir has written on this issue. Yes, yeah, and I think other scholars have mentioned this too. But there is a Yeah. difference. There are difference of opinion on this matter. But it's interesting that हो सकता है कि ऐसे creatures हो जो अल्लाह ने create किए हो, जो humans के साथ similar हो, but because of the lack of intelligence that Allah gave Adam, that intellect Allah gave Adam, which was unique, that they resulted in just causing corruption and bloodshed and destroying things, right? Maybe that was the case. That Allah created Adam. Hence, when the angels question about causing corruption and bloodshed, Allah answers them by showing that Adam can learn things and convey things, because Allah taught Adam the names of things. So that was very interesting. So maybe that was the case. That's my understanding. So either way, there is no problem. Lekin again, एथिस्ट क्या चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो लोगों के दिमाग में कि या तो आप एवोल्यूशन को चुने और या तो आप इस्लाम को चुने. But that's not the case. It's a false dichotomy that people are presenting. His comment is that there is a lack of explanation about Islam in detail for every aspect of life in among Muslims itself. I couldn't understand. Yeah, I don't understand where the question is going, bro, to be very honest. There's lack of... Maybe I think the brother is referring generally amongst the information that's been given to Muslims about Islam, to general understanding in Muslim की, वो सही, it's not comprehensive. जैसे होनी चाहिए. Maybe that's what they're referring to. Okay, last comment from today will be don't end soon, lovely session. So people, Arsalan is saying it's a lovely session, don't end this session soon. Jazakallah khair, brother Aslan. Maybe, inshallah, we can do more of these sessions in the future, inshallah, on other topics. What I would want to do is, how can people connect to you if they want to ask you something? Do you have any email ID? So my best, so I'll just give you where you can find my stuff. So I have a YouTube channel called Epistemics. That's Epistemics. So all of my stuff is on there, most of my stuff. That's where I'm really active. I'm not really active on Facebook too much or Instagram, although I have those channels. You can message me on IHDawah, DAWAH @gmail.com. But I find it, I may not be able to respond to you guys because I get loads of questions. So the best thing is maybe to just drop me a comment under one of the videos that I put out, and I normally go through those regularly. So I'll be able to answer your questions there. Okay. Thank you so much, Imran. Nice to have you over the webinar, and I'm extremely thankful. I'm looking forward to more of these, inshallah. Jazakallah khair. May Allah bless you, bro, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for setting up these sessions. And now we need to have Muhammad Hijab on the session. So you need to go. Inshallah. You need to tell him Inshallah. you had a lovely experience. The conversation was great. The host was extremely good. So take out the time. Yeah, we'll tell him to learn Urdu before he comes on, inshallah. Yeah, okay, inshallah. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. Jazakallah khair. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.